myself, trying to think of ways to you. Your voice stuck in my brain, we never got to see it through. And I know I feel more pain if we're speaking truth. Cause when the daylight comes I still lose, So will I feel it again? I just don't know. And I'm hoping I'll find a way to let go. So if you love me, how could you leave me so low? So will I feel it again? I just don't know. I just don't know. I just don't know. Cause when the daylight comes I still lose, So will I feel it again? I just don't know. And I'm hoping I'll find a way to let go. So if you love me, how could you leave me so low? So will I feel it again? I just don't know. I just don't know. Looking back at our time, hoping that we did it right. And give me any reason to call you up late at night. And we know it's for the best, I won't put up a fight. Cause when the daylight comes I still lose, So will I feel it again? I just don't know. And I'm hoping I'll find a way to let go. So if you love me, how could you leave me so low? So will I feel it again? I just don't know. I just don't know. I just don't know. Cause when the daylight comes I still lose, So will I feel it again? I just don't know. And I'm hoping I'll find a way to let go. So if you love me, how could you leave me so low? So will I feel it again? I just don't know. I just don't know. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. Hello. Dragon Neil O in the chat. गगन मेरा 12 फुल स्टार कर देना। अच्छा है कोई फैन तो नहीं, आज 3 हेटर मिले। आज तो आपकी स्ट्रीम मस्त चल रही थी ना। मैं आया फॉक्सी भाई। हेटर वाले मेरे सामने नहीं आया, मतलब जब तक मैं देख रहा था 1 घंटे तक देखा मैंने, 7 से 8 तक। अभी 11 बजे ऑन करो। अरे यार गगन भाई आप व्यूवर चुराओगे मेरे। नहीं यार थोड़ा एक टाइम फिक्स करो। कल एग्जाम है, कुछ पढ़े नहीं, जो होगा देखा जाएगा। ये बात यही तो कॉन्फिडेंस है ब्रो। इंटरनल्स के लिए कोई नहीं पढ़ते, इंटरनल्स पहाड़ में जाए। Just let me. If you ever find yourself in a pinch, I can help you out.
अभी 11 बजे ब्रो, मेरे दिल करता है 24/7 स्ट्रीम। मैं बोल रहा हूँ ना, आप एक बार ट्राई करो ना 24 आवर स्ट्रीम, क्यों नहीं कर रहे हो? कल एक सेमेस्टर का एग्जाम है, इंटरनल कल था। हाँ ओके ओके, कोई नहीं, छाप देना, क्या ही जा रहा है। छपाई इज बेस्ट, ह्यूमन लिमिटेशंस है जो करना नहीं देती। अरे सब कर सकते हो भाई आप, सो जाना लिख के, ओनली स्लीपिंग करके टाइटल में एडिट करके सो जाना, फिर चालू करना थोड़ी देर बाद। अरे ये बताओ गगन भाई या ड्रैगनिल भाई, डिस्कॉर्ड पे नोटिफिकेशन आई है स्ट्रीम की कि नहीं? मेरे को नहीं आया। ओके नहीं, वैसे ब्रो मैं गैम्बलिंग को करनी नहीं होती, नहीं पर कोई आइडिया नहीं है इससे ब्रो, में गैम्बलिंग ऑन करनी है होती है पर कोई आइडिया नहीं है। अरे स्ट्रीम लैब से होता है वो गैम्बलिंग वाला सीन, तो शेयर कर देते हैं स्ट्रीम मेरे को। डिस्कॉर्ड पे शेयर कर दिया या कुछ दिक्कत है, फिर मैंने सही से पिन कोड को सेटअप नहीं किया है। The criteria for certificate exams are straightforward enough. What it really comes down to is whether you are willing to put in the time. If you study and practice, then it's really not all that difficult. शील्ड लैब में कैसे करूँ? उसमें गैम्बलिंग वाला आता है, बैटल पास अनलिस्टेड ओपी है, जो भी बोलो, मैं लेने वाला हूँ उससे कोचिंग के लिए। मुझे भी याद नहीं, लेकिन वहीं से होता है। स्ट्रीम लैब में एक ऑप्शन आता है गैम्बल वाला, या गेम करके कुछ एक चीज होती है, उस पे आता है वो। अभी आया वो तो अभी मैंने भेजा है मैनुअली, वो पिंक कॉर्ड का फिर नोटिफिकेशन वाले चैनल पे मेरा कुछ फक्ड अप है, उसको सही करना पड़ेगा मुझे, फिर सही होगा वो। अभी तो मैनुअली किया है मैंने, पहले पिंक कॉर्ड का जा रहा था। बड़ा लोग बीपी बाय करता है, अभी नहीं लूंगा यार, मैं बाद में लूंगा। अब अभी तो बस मैंने ये लिया है, क्या कहते हैं, ये मेरे पे 28। मैं देखता हूँ जब मुझे कोई कैरेक्टर लेना होता है, एकदम मन करता है लगातार कोई कैरेक्टर लेना, तभी बाय करता हूँ मैं, ऐसे नहीं करता। बहुत ही रेयर इन्वेस्ट करता हूँ मैं पैसा गेम में। किस चीज का एग्जाम है कल ड्रैगनिल? कौन से सब्जेक्ट का है? Quietly now. Things are about to get dicey. Propagate! Stand with me! The process of elimination. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। अरे भाई साहब, ये क्या चीज होती है बे? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। तो एमबीए कर रहा है कि बीकॉम कर रहा है? ये बीबीए क्या, एमबीए, बीकॉम, एमकॉम क्या कर रहा है? इसका ई कूलडाउन में कैसे चलेगा? बीकॉम क्या होता है? Busted. Game's up. Fun's over. Spring forth! Stand with me! Scatter!
from debt. हर्षल भाई हेलो, क्या हालचाल। रेस्ली और न्यूब्लेड का गेम प्ले देखा कि नहीं भाई? रेस्ली तो मैं पक्का पुल करने वाला, कितने मजेदार है, कितना मजा आने वाला है। लेकिन यार दुविधा ये आ गई है मेरे भाई लोग, ये देखो 4 लोग 3 लोग हैं भाई, कम से कम 4 लाइक तो होने चाहिए स्ट्रीम पे। 2 लाइक ठोको यार। और रात को ही देख लेते भाई ना भाई। दुविधा ये आ गई कि लीनी अच्छा निकल गया है यार, लीनी बहुत सेक्सी निकल गया है। उसका डैमेज देखा आप लोग ने? लाइक ओके ओके, अब जाके 3 लाइक हुआ। भाई साहब थैंक यू थैंक यू। अबे लाइक से ही अब एकमात्र सहारा है जिससे मेरी स्ट्रीम थोड़ी विजिबिलिटी बढ़ेगी लोगों को, नहीं तो भाई इसके चैनल की तुम लंका लगी चुकी है पहले ही। HP स्वर्ड देखा, इट लुक्स लाइक ODM गेयर। हाँ थोड़ी सी, लेकिन वो तो गाचा में है ना, तो क्या ही करोगे उस स्वर्ड का। डैमेज अच्छा लगा, डैमेज अच्छा तो लगा मेरे को, मुझे भी लग रहा है यार। लीनी ब्रो, अबे भाई लीनी लेवल 1 का लीनी 50 हजार डैमेज कर रहा है भाई। सब छोड़ो भाई, सोच सकते हो लेवल 1 का लीनी, टैलेंट्स लेवल 1, 50 डैमेज कर रही है उसकी अल्ट। और भाई सबसे बड़ी बात, किसके पास धेया है, जिसके पास धेया है उसके लिए तो भाई लीनी बहुत अच्छा कैरेक्टर है। धेया, काजुआ, बेनी, ये 3 चीज जिसके पास है भाई उसके लिए तो अलग लेवल पे है। सीरम मशीन भाई सेक्सी डैमेज दे रहा है ड्रैगन भाई, मुझे बड़ा बड़ा मन कर रहा है लेने का। लेकिन भाई ये रेस्ली ज्यादा कूल है, भले ही रेस्ली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं निकलेगा, लेकिन भाई रेस्ली ज्यादा कूल है यार। ये मैक्स संडे तक हो पाएगी अब ये, अभी मैक्स नहीं कर पाएगा मैं इससे। ब्रेस्ट्री नहीं ले रहा हूँ मैं ले रहा हूँ। आप बताऊँ ब्रेस्ट्री में क्यों ले रहा हूँ? देखो मेरे पास ऑलरेडी सब बना है, देखो उसकी प्रीमियर टीम है मेरे पास, ये देखो ये टीम है, ये है काजुआ है और शिंचू है भाई, जोरदार टीम बनेगी। प्लीज उसको हीलिंग की जरूरत नहीं है, मस्त टीम है। उसके बाद जानते हो मेरे पास सेट भी पड़ा है, फेजू का है मेरा, ये सेट पूरा मुझे पड़ा हुआ है मेरे पास इसका 29 180, और वेपन ये वाला दे दो इसे। $62 180, और फ्रीज में ये 108 100 पार हो जाएगा वो। ये थोड़ी सी बकचोदी हो रही है। क्या एक्लेनो कोलम बन रहे हैं? अरे एक्लेनो कोलम बन रहा है, ये कहाँ से लिखा है अबे? तो स्वर्ड थी भाई, ऐसा मत बोलो, एक को स्वर्ड रहने दो। बोल रहे बस वर्थ है क्राउन करने के लिए। मैं करूंगा, मैं 9-10 करूंगा, 1-9-10। मेरे पास क्राउन नहीं है ना ज्यादा, मैंने वो किए नहीं, इवेंट्स नहीं किए और वो एक्सप्लोर नहीं किया ना, वो ट्री नहीं किया, तो मेरे पास क्राउन बहुत कम बचे हैं। तो बस 1-9-10 करूंगा मैं। ये लांस बस इज टू बिग टू क्राउन। ये लांस चल भाई वर्ड प्ले कर रहे हो आप यहाँ पे हैं। मेरा फर्स्ट राउंड ऐलान के लिए है। आप हर्षल भाई की बात को समझो, उनकी फीलिंग समझो, आप क्या बोलना चाह रहे हैं हर्षल भाई। लॉल आज देखो ज्यादा बंदे आते हैं स्ट्रीम पे तो वो किया जाएगा, वाइफू टियर लिस्ट बनाई जाएगी। मैं पहले सोचा कि वह करते हैं, थोड़ा लेट हो गया मैं स्ट्रीम पे आने के लिए। ये लॉन्ड नीड 2 क्राउन। एक पर एक ही लटक पाएगा। भाई ये लान इज 7-10-10 नॉर्मल अटैक्स क्योंकि
मैं तो 9-10 करूंगा क्योंकि मेरे पास है नहीं, मेरे बहुत कम ही कैरेक्टर 10-10 है। मेरा शायद ये तो होगा क्योंकि मैं हस्बैंडो वाला आदमी हूँ। 10-80 10 है वो, नहीं तो ये भी नहीं किया मैंने, कर सकता था मैं सबको 10-10 नहीं करता कभी भी। कल हैतम भी है 10-10-8 मिन मैक्स करके रखता हूँ। ये तो 1-1 पे, इसकी भी एक आज 8 किया है मैंने इसे, ये 6-8 है, ये 8-9-9 है, ये तक 10 नहीं है मेरा काजुआ। सिर्फ अभी भी को ट्रिपल काउंट किया है। मेरा अटैक आर यूजफुल इन ओवरवर्ल्ड दैट चार्ज अटैक इज। ओके ओके, ब्रेक थ्रू भी बार्ब है ना उसका। C6 ब्रेक थ्रू बार्ब क्या है? मैं कुछ भूल रहा हूँ। ब्रेक थ्रू बार्ब क्या है? व्हाट द फक इज ब्रेक थ्रू बार्ब? ओके, ये तो पढ़ा ही नहीं, ये भी कुछ होता है क्या? ये आज पढ़ रहा हूँ मैं, लॉल। ये भी इसके किट में कुछ है, ये तो पता ही नहीं था मुझे। मिक्की होला होला। यार फिर स्पेनिश में बात करनी पड़ेगी आज। मेरा C6 broken because of that। हाँ DPS बन जाती है ना, मुझे इतना पता था C6 पे DPS बन जाती है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इसके 4 शॉट में डैमेज है, ऐसा कुछ बना है। उसका चार्ज अटैक स्केल्स और नॉर्मल अटैक्स, उसका चार्ज अटैक HP लिखा था ना ड्रैगनिल भाई। रुको ये देखो, अच्छा रुको, विल डील AU हेड। अच्छा नॉर्मल चार्ज का उस पर रहेगा, जो AU हेड डैमेज पड़ेगा वो ये लांस मैक्स XP पे है। क्या है इसका स्किल एट्रीब्यूट? 11 फुली चार्ज और 125% है। ओके समझा मैं। कोमो एस्तास भाई, आप फिजिकल एलान यूज करते हो? हाँ ड्रैगन फिजिकल एलान यूज करता है। मैं फिर भूल गया कोमो एस्तास मतलब क्या होता था। आपको HP की जरूरत नहीं लॉल भाई। लेकिन भाई सही बताओ, ड्रैगनिल का वे ऑफ प्लेइंग इज मोस्ट एंजॉयबल गेम ऑफ प्लेइंग। ड्रैगनिल ने कितना किया है वो एबिस का स्टार अभी तक? बहुत कम किया होगा जहाँ तो मुझे लग रहा है। ग्यारह थी वो भी गगन की आज, देख रहे हो? यही है चार्ज अटैक वाला, समझ गया मैं। गॉट इट, दिख गया क्या है ये ब्रेक थ्रू। 11th क्या टीम यूज की गगन ने? वाइट पैक उधर उधर कर गया। समझा, बैलेंस करके। अब
ड्रैगनिल भाई आप कौन सा नेक्स्ट कैरेक्टर निकालने वाले थे मैं भूल गया। सो मेरी कमीशन आर सो बोरिंग भाई। अरे मैं चेंज नहीं किया, मुझे फाउंटेन का खोल के उधर स्विच करना है। वो अभी फाउंटेन की स्टोरी करेंगे उसके बाद खुलेगा ना वो। ऑन गॉड वो गार्सिया एमसी का वर्ल्ड क्वेस्ट बाकी है। ओके सिग्नारी यूज करना लेवल 1 का वेपन था उस पे। ओ भाई साहब आते ही उसका कमीशन ही नहीं उसका कमीशन। ओके गॉट अच्छा हर्षल मी एलेग्रो पता नहीं कौन सा निकालने समझ नहीं आ रहा। कुछ प्राइमोस होंगे सब सोचेंगे। आपने कुछ रिसेंटली अच्छा खासवा निकाला था ना आपने समझ आ रहा। ये लान एक बार में कितने लोग को उस पे बांध सकती है? Here you are. ये लान एक बार में कितने लोग को टैग कर सकती है अपने अल्ट से? यश ये लान जो जब तक एबिलिटीज ऑन रहेगा तब तक एक सबको एक बार मार सकती है। ओह मतलब मैक्सा नहीं है कि मैक्सिमम इतने ही बंदों को अटैक कर सकती है अपने ही से। मुझे लगा था क्या बोलते हैं मिनिमम मतलब कुछ होगा लिमिट 3-4 बंदों की बस। Take it easy. अरे नितेश भाई बड़े दिन बाद वेलकम टू द स्ट्रीम। क्या हालचाल क्या चल रहा है? एग्जाम्स खत्म हुए कि नहीं आपके? आप ये बताओ। कोई लिमिट नहीं है जिसको ट्रैक करेगा सबका अप्लाई होगा। समझ गया ठीक है। हर्षल तो भाई मी से ही लगा हुआ है। Gotcha. यस सबको पड़ा भाई। Flicker. तो पता ही Diffract. मस्त भाई आप बताओ क्वेस्ट किया नहीं? चालू करना है वे आज खेला ही नहीं हूँ मैं भाई सुबह से। चालू करना है मुझे। देने तेरी दोस्त आई हुई कल की। येलन कैन टैग मी इंस्टेड इफ शी वांट्स टू। भाई मेक मी फीरीना। मैं बढ़िया नितेश भाई। ये ऐलान निकल गई यार फाइनली। 50-50 जीता मैं लेकिन 81 क्या कहते हैं पेटी पे मिली। काफी लेट हो गया। मॉमी आई लेकिन बड़े देर से। फर्स्ट पास किया इसका और आई कैन कंफर्म एवरीवन इज फकिंग किड नाइदर। हाँ वो जो चूतिया है ना चूतिया है वो तो उतना तो मुझे समझ आ गया था ट्रेलर से ही। बच्ची है मुझे तो लग भी रहा है नकली यार कौन है। प्लेस होल्डर और कौन है मुझे तो लग रहा है। मुझे तो लग रहा है न्यूवी असली और कौन है लेकिन आर्कॉन है नहीं। न्यूवी भी चिढ़ता है उससे। चूतिया वो भी न्यूवी भी उसको चूतिया ही मानता है। Hammer do the second part by AFK रहूंगा। ठीक है डेरित भाई करो। मैं भी चालू ही करूंगा अभी। भाई ऐलान को गुड नाइट वाला वॉइस लाइन सुन ले। कौन सा वाला है? कब आता है ये? जब वही AFK छोड़ूंगा तब। Ad Astra. Thank you for completing today's commissions. Here is your भाई ये सब कुछ हो गया अपना। आज का डेलीज खत्म सब करने।
चलो भाई क्वेस्टिंग की तरफ बढ़ा जाए, Get me closer to the truth. गाना बंद किया जाए, क्वेस्टिंग करते हैं अब। So, got any news for me today? अच्छा वॉइस लाइन तो मैं इससे भी सुनता हूँ ना, सी दबाओ मेन्यू में। हाँ रुको, याद है, अच्छा याद दिलाया। प्रोफाइल, वॉइस ओवर, गुड नाइट वाला ये। Come on now, drink your milk and go to sleep. What? You're not a kid? All right, well, I'll just leave it right here. It's yours if you want it. I usually fall asleep well after midnight. Full disclosure, if you're a sleep talker, I can't promise I won't take notes, okay? भाई ये क्या है जी? किसका दूध पिला रही है ये? Genshin no liu like. और भी है क्या खतरनाक? ये क्या था कि किसको दूध पिला रही है? भाई कुछ ज्यादा ही खतरनाक थे ये तो भाई। अरे किसी लीसा वीसा का भी कुछ खतरनाक है ना, और दो कैरेक्टर्स का भी खतरनाक है, ऐसे ही टर्किश टाइप पूरा है, डबल मीनिंग। किसकी बात हो रही है? आई विल ड्रिंक एंड नो प्रॉब्लम। किसी किसको प्रॉब्लम होगी आप ये बताओ। You said you were going to see Lady Farina? Well, it seems Lady Farina has come to see you. जा जा जा। Similar to come to see you. फिरीना आ गई? अबे तो क्लोरिन है। आओ बेचे, मम्मी इज हियर। ओ भाई, टाइट बटन्स, इफ यू नो यू नो। एलान बेबी लाइव कम्स। भाई क्लोरिन फेल कर देगी एलान को। ओ भैंस की आग। So, She is the head. she's the head But director? how did she know we are looking for her? How did she know we were TMO. looking for her? TMO, TMO. Me TMO. Jiggle physics on top. भाई एक चीज तो सीखी है मुझे मैंने एम टैश को देख के। My dear people, rich and poor, those with cup in hand and those with nothing at all, raise your glasses in celebration. If you don't have one, then just raise your hand in lieu. भाई क्या चूतिया है ये। ये As you सुमेरी can को all लौंडा यहाँ क्या see, कर रहा है? two unfamiliar travelers have arrived in our nation. Come, ये let कैसे us पता make a इसे? toast in honor of this traveler and her companion who have journeyed here from distant lands. अच्छी तो दिख रही है, हर चीज बातें कैसे कर रही है चूतिया टाइप्स। ये आई, इसको पता कैसे चला अपन आए हुए हैं? चूतिया है I've भाई, ये long फिशल heard of फिशल the जैसी turmoil चूतिया है and ये। chaos you've left in your wake It looks as like you visited toothpaste. other nations. But Colgate. I welcome you nevertheless. No, I have come to receive you personally. Fear is for insignificant cowards. ओ बेटे। I am a god, and I will never entertain the notion of such meaningless डायलॉग देखो वैस wariness. किया। You can be rest अबे assured. तो और कौन है तो क्या I होता है, see ऐसे चूतिया टाइप की बात clearly you're- करेगी। Of course, seeking an audience with me is the most sensible thing to do. It will allow you to truly behold my power and witness my authority. Intelligent people always gather under the correct banner. I, Fosalor, hereby welcome you to the nation of Hydro and acknowledge the value and significance of your trip. Now you may rejoice in Now, this. you may rejoice. Paimon still can't believe नाहिदा it. बेस्ट और Feels कौन? like we've only नाहिदा been भी here for a few इरिटेटिंग है यार। जोंगली सबसे बेस्ट और कौन है जिसको सुनने में अच्छा लगता है? वेंटी महाचूतिया, रेडन घूसट, नाहिदा बच्ची है और ये तो एटीट्यूड वाली कुतिया है ये। फिरीना अजुल गुआ मैं गुस्ता।
क्या लिख दिया भाई इसने? इसका ट्रांसलेशन करो जरा ना। हैंड क्या हैंड ना इधर इरिटेटिंग। यस मुझे उसकी आवाज बहुत इरिटेटिंग लगती है। मुझे छोटे बच्चे इरिटेटिंग लगते हैं एक्चुअली में, How should Paimon describe it? इसलिए। A little हाँ भाई ऑफिशियल वाले मॉडल पे थोड़ी अदल बदल करके वॉइस एक्टर भी सेम है, सेम ही होगी। वॉइस एक्टर तो शायद दूसरी है, लेकिन भाई नितेश भाई समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नितेश भाई समझ गया। Miss I Archon. do Archon. How did you know we were coming? I children but she is cute as. आवाज की बात कर रहा हूँ हर्ष भाई, आवाज। फिजिकल रूप की बात नहीं कर रहा, आवाज की बात कर रहा हूँ मैं। I see. As Outlanders, you inevitably lack even some of the most basic understanding. Don't forget that even the gods can be divided in. You had best stop and consider. Do you really have the noble qualities and etiquette necessary to communicate with a god? All it takes is a flick of my finger for me to know everything about you. Whoa. Talk about sounding high and mighty. Basic and get to her ऐसे चूतिया है भाई ये। Oh, what's with these looks? Perhaps the welcoming ceremony थोड़ा सा still Game of Thrones वाली isn't vibe दे enough? रही है ये। What else should I say then? Wow, I didn't expect to see Lady Farina here. What a What a surprise! Wait, does this mean they're the legendary blonde traveler? How did I not notice before? Legendary हो गए अपन भाई। Hey, what's all the commotion? Oh, is that Lady Farina? Of course. That's the blonde traveler. The one all those stories are about. Lady Farina came here to personally see I her. bet this is going to be a duel of the I bet century. this is gonna be the duel of the century. Okay, ये लोग कुछ I've got to see this. I knew Lady Farina would never. Yes, but don't get too excited now. My dear believers and spectators alike tend to get quite rowdy. कसम से एक थप्पड़ मारने का मन कर रहा है इसे खींच के मुझे। एक थप्पड़ मारने का मन कर रहा है। हम जा रहे हैं। काफी बिलियन बोरिंग लग रहा है। I चलो have ड्रैगन बाय determined बाय। that there will be an epic duel between myself and this traveler from another land, just as you were hoping to see. Now she wants to fight? Aren't we getting a little ahead of ourselves? क्या हो रहा है ये? Are you not afraid? मैं भी Might कर रहा I हूँ remind you that this ठीक is है, a- What are you ठीक trying है। to do, traveler? Provoking a god in front of her people? Stand down, Clorend. I Chloride. admire her bravery. Wait, Few Cloride का have scene the देखते जाता courage to हूँ। draw Okay. their sword against a god. She is obviously a true warrior. Unfortunately, people nowadays only crave to be thrilled, and a mere मुझे तो duel लग रहा है will असली not में बहुत slake फट्टू है their ये। thirst for excitement. फरीना असली में बहुत फट्टू है, यहाँ पे she's नौटंकी right. कर रही है। Just a duel. On Aranias, criminals are always जो जा रहा है भाई, requesting like duels ठोक के to जाना defend stream their पे। honor. I'm getting a bit old to tell the सब truth. लोग आर्कन क्वेस्ट ही करना है। सबको आर्कन क्वेस्ट का फर्स्ट एक्सपीरियंस Then, लेना है। as the god of justice, I shall face this traveler in another kind of duel. A duel in court! हैं जी, जबरदस्ती का केस। Right. Now that'll be worth seeing. Right. This is Fontaine, after all. Such a grand opera house. Why do you care so much about the crowd's reactions? Seems you've spent a little. Besides, how exactly do you plan to have a duel in court? You mean you're going to put us on trial? Oh, we have. According to Fontaine law, no one is permitted to release any flying objects within Fontaine city limits during the first 3 days of each month. Oh, so that's what they've done wrong. You call that obvious? What kind of law is that?
Oh my. Flying object? You mean precisely! Now, if you two have no objections. My apologies, Lady Farina. I don't mean to spoil the fun. But if you would allow me to interject, I don't think that Paimon here meets the definition of a flying object. You tell her, Lyney! Finally someone who's not crazy. How could anyone call Paimon a flying object? लिटरली किसी बच्चे ने लाइन लिखी है स्टोरी कैसा लग रहा है Great magician Lyney. ओ भाई My beloved एक मिनट citizen. कॉल ऑफ ड्यूटी I'll मॉडर्न permit वॉरफेयर 3 you का to रिवील आ गया object. होगा But how exactly do you plan to prove? कॉल ऑफ ड्यूटी your मॉडर्न claims? वॉरफेयर 3 का ट्रेलर देखा जाएगा वीडियोस अभी नहीं आया Genshin As a magician who 5.2 just Hugo rained on your Ninja parade, Prevento. I naturally should shoulder the responsibility of saving the show. So, with such an Such a audience audience gathered gathered here, here, allow me to perform perform a trick for tricks. everyone. है अरे यार गजब है भाई Ta-da! तड़ा What's that on Paimon's back? Hey, when did you do that? प्यार की थपकी दी है इसने इसको प्यार की थपकी There. As you can all clearly see, Paimon should be classified as, This well, is something अबे like यार a क्या है balloon. ये This rope has been in the कौन traveler's लिखता है hand ऐसी all story? along. वो सब You चूतिए call समझ भी that रहे हैं magic? You've सीरियस got to be joking. I thought it was pretty good. Nice one. Huh. I'm not sure what to think. It seems Lady Farina's charges no longer hold water. Amusing. Very amusing, Lyney. Just the sort of unexpected twist that I enjoy. With you here, today's performance can finally be called complete. Performance? You see all this as a performance? In Hare which case, Rishu bhai, hello, welcome to consider the stream. matter कैसे of हो your आप? trial resolved. The god of justice will not bring charges against an innocent person. But when there are valid grounds, I will not only judge travelers from abroad, but even मैं यहाँ the बकचोदी gods of करके हाइड्रो other आर्कन क्या हाल एकदम बढ़िया रिशु भाई एकदम मस्त आर्कन क्वेस्ट चालू किया हूँ भाई मैं forward to seeing your और upcoming बकचोदी देख रहा हूँ मैं इस performance at the छोटी Opera बच्ची House, की Miss ज्यादा Lyney होशियारी and झाड़ Miss रही है ये Lynette. That's enough for now. Toodaloo. लुलू क्लोरीन का बस इतना ही सीन था भाई इतना सा बस टाइट बटन दिखा के खत्म And just like Miyakemi She's gone. my bad Well, that's the most unpredictable Archon Paimon's ever seen. You never even had a chance to ask her anything. But that's a problem for future Paimon. That whole scene just now was really... Don't mention it. I just happened to चूतिया remember मान that भी रहे there कि वो was such a बैलून law, है so I did a सिर्फ little फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है भाई preparation, सबसे just चूतिया in नेशन लग रहा है case. मुझे तो So, भड़वों की जगह ये now do you see what kind of god Lady... She can be a bit confusing at That times, but she's still she is unable still to- amenable to reason. Anyway, Paimon had no idea you were a magician, Lyney. It sounded like you'll be performing at the Opera House, right? I just know a few simple tricks I use to make a living. Lynette is my assistant. It will actually be my first इतना time performing on the most story कहीं prestigious का stage नहीं in था Fontaine, अबे स्टोरी तो the चलो Opera House. ठीक मतलब isn't the Opera बचकानी House स्टोरी है for छोटे बच्चों के लिए ऐसी लग रही लिखी गई है But isn't opera When there are no public The trials trials being being held, held, the the opera Opera House variety hosts of a other variety oh, of okay. other performances.
To the people of Fontaine, and speaking of performances, I I would be would remiss Opera to house में forego कौन सा this यश opportunity नादा नो gifted जाजा by नाड़ा fate. ये क्या बोल Might I रही है भाई invite the two of you नादा to जो see my जाजा नो performance? नाड़ा My brother's always excited to make new friends. Oh, sure. We don't really have anything to do इसको now. And we आर्किलेनो wanted to बोला come है to the दोस्त opera house बनाने के लिए anyway. जहाँ तक इसकी बाप है जो वो बोला है जो लीक्स में आया था Splendid. In that case, why don't we go together? I'll show you the way. I just have something to take care of first. You really mean it? Then I'll take you up on your offer. This is a magical item known as a magic pocket. Perhaps you can help me distribute them to the people here. Okay. Huh? What are they going to use it for? About that... You asked me before about the prophecy, right? Let me start by telling you a little more about what it... I'm not sure exactly when it began, but a prophet... It says that every person in Fontaine is born with sin. No matter how the nation of justice holds trial after trial, this sin cannot be absolved until one day, the water levels in Fontaine will rise, and in the end, the people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain, weeping on her... That sounds pretty gloomy. Why are people इसका in कुछ दूसरा Fontaine मतलब born होगा ये with sin? क्या कहते What हैं is that? इंडिकेशन There वाला are मतलब lots है of ये guesses. मतलब कुछ Some लिखा say that कुछ the है लेकिन ancestors उससे of Fontaine represent stole दूसरा the... करना Others चाहते हैं। say that the people of Fontaine never heeded the first Hydro Archon's warnings and offended Celestia. But here in Fontaine, evidence is what matters. There hasn't been concrete evidence for any of these... If even the people in Fontaine don't know what sin they committed, wouldn't it be better just to ignore the prophecy completely? That's exactly what the people did at first. But in the last few years, the water levels in Fontaine have actually started rising. Many places have already been completely submerged, and now lie beneath the sea. Many people carry on with their lives as before and shrug it off as a natural phenomenon. But my family and I think that the people of Fontaine shouldn't ignore the possibility. We hope that at least the people who reside near the waterfront can move away before it's too late. So, we've started distributing magic pockets to them. As a magical item, these magic pockets have astonishing capacity. Oh, Paimon gets it! It's like preparing for डोरेमोन a का rainy टाइप का day! पॉकेट Perhaps only Yeah, absolute ladies' power bag could ever contend with कितना भी such a सामान डाल दो। catastrophe. But who knows? We're just tiny specks in the grand scheme of things. Now, if you'd like to help, then please... ये चूतिया काम करवाते हैं अपन से ये लोग मैजिक पॉकेट बांटे अब हम लोग बैठ के बहुत बढ़िया कौन लिखा ये फाउंटेन की स्टोरी साले पकड़ के मारो उसके ऐसे की तैसे यार हम लोग ये इतना चूतिया स्टोरी बता रहे हैं लेकिन असली में इतना चूतिया स्टोरी होना Magic. Thanks. खुद ही बांट देते जब तीन ही लोग को देना था What's this? So you also believe in the prophecy? Keep it, I want to. What? No, I believe in the prophecy. The story says that people once lived in the ocean. As time wore on, people desired to live on land and developed blood vessels, encapsulating the sea within their bodies. Thus, the people set foot. So, if you ask me, water rises and takes us all, it'll be like we're going home. Oh, we hadn't heard that one before. But मैं वो Archon press कर रहा था can't सब live चलेगा underwater. इसमें They'll die. All right, I'll take it. I get. Things are about to get dicey. रिजल्ट क्यों मारा इसने इसकी एल्ट कितने देर तक के लिए रहती है 15 सेकंड शिंचू की एल्ट 15 सेकंड
वेंटी जोंगली शोगन नाइदा 3 नाइस वाओ। मुझे तो भाई जोंगली पसंद आया, शोगन पसंद आई, वेंटी छक्का है, नाहिदा बच्ची है, और फ्यूरिना अभी तक मुझे बहुत हरामी लग रही, कुतिया लग रही है। आई एम नॉट, क्या बोलते हैं? Huh? I don't want that thing. Wait, life is all about living in the moment. What use is there in worrying about the future all किसको the बोल time? रहा हूँ जिसको हिंदी We'll आती cross भी that नहीं bridge है। when we get to it. You should still take it. You never know when it'll come in handy. Oh, all right, fine. Thanks. It's just that if I start moving, that means I've already given up on the life I have now. I'd really rather not. Oh, you already handed out all of the magic pockets? That was fast. So, what did people have to say? I bet you heard some, interesting opinions. मेरी लिनेट को देखोगे? दिखाओ, बना लिया आप उसे। Yes, but that will खेल change. के देखनी है Anything else कि you लिनेट need to कैसी do होती before we है। leave? देख लेते हैं अभी, ये कट सीन के बाद देखते हैं। Yes, one last thing. I have the magic pockets made by a workshop in the court of fun. So, you wanna click? Oh, that would be much. या आते इतने आसानी से दोस्त कैसे बन जाते गेंशिन में, समझ नहीं आता। कोई किसी का इतने आसानी से दोस्त कैसे बन सकता? अच्छा है, मगर बर्थ नहीं है, 6 नहीं लगा, बस C6 आ गई। C6 कैसे आ गई शिवा? ये जोंगली भाई सारा शोगन थी। C6 कैसे आ गई आपके पास? कितना पुल किया आपने C6 के लिए? मैंने 40 पुल किए, तब भी मुझे C6 नहीं मिली। आपको मिल गई C6? एक को नहीं मिली मुझे 40 में भी। दुआ डी ऋषु भाई, आप एडेड नहीं हो मेरे में, आप थे ना मेरे में। सब खेल ही रहे हैं आधे से ज्यादा मेरे तो भी। या गेम प्ले देखा दोनों का। यस अनुभव भाई, आप डिस्कॉर्ड पे हो क्या? नहीं क्या? जैसे मैं बोला था 1:30 बजे के बाद लीक आएगी, 1:50 मैंने पिंग कर दिया दोनों देख के। अनुभव भाई, दोनों का गेम प्ले बहुत जोरदार है। वेस्ले तो भाई, मैं तो वेस्ले तब पुल ही करने वाला हूँ अब। लेकिन वो कैसे नहीं आप मिली आईडी? पता नहीं, आपकी मेरे पास थी जहां तक मुझे याद है। अनफ्रेंड तो किया नहीं होगा मैंने, क्योंकि मेरी आईडी लिस्ट तो भरी ही नहीं है अभी तक। नहीं है आपको। लिनेट देख रहा हूँ अभी मैं। अनुभव भाई साहब, लेजर चला रहा है अपना बंदा उसमें। ये न्यूब्लेट का स्किल क्या है भाई? अबे लेजर चला रहा है वो। अभी डीपीएस C6 आपकी है। C6 कैसे मिली? ऋषु कितना पुल किया? क्या पुल किया तूने? पानी मार रहा है साला। लेजर चला रहा है भाई, खतरनाक। C6 मिली कैसे तुझे भाई? C6 मिलती तो मैं भी बनाता भाई इसे। 1-1 क्यों है इसको? इसको तो बड़ा, इसको किस पर रखा है? तो रेशियो तो बढ़िया है। ये ऐलान देख। ओके। पुल पता चलेगा कितना पुल तूने किया भाई। मेरे तो 40 पुल किए, मुझे एक लिमिट नहीं मिली, तुझे 6 मिल गई। बताओ, ये ऐलान C6 कर लिया क्या? ओ बेचे, पैसे ही पैसे। एक बच्चा है भाई, देखो अनुभव भाई, ये है बड़े आदमी। एक क्यों छोड़ा? ये भी ले, साला सेट भी नहीं चढ़ाया है। वो एक टेस्टिंग कर रहा हूँ, निकल गई। ओके, अंधा पैसा, बहुत अंधा पैसा भाई। लेकिन लिनेट का मुझे डैमेज चाहिए देखना है मुझे। इसके ऋषु भाई, इसका बना के वीडियो भेजो ना डैमेज वाला डिस्कॉर्ड पे। क्या चढ़ाया आपने? एचपी, अटैक, एनिमो क्रिट डैमेज। ठीक है,
इसका इन्फ्यूजन कितने देर तक रहता है? ऋषु भाई आपसे स्पेनिश में पूछ रही, जवाब दो इनको। इसका C6 कितना रहता है अनुभव भाई? इसका C6 कितने देर तक एनीमे इन्फ्यूजन देता है? मुझे आपके अकाउंट से खेलना है ऋषु भाई एक बार। मैं देखना चाहता हूँ कि वेल अकाउंट मतलब इतना वेलिंग से कितना मजा आता है खेलने में। कलेक्ट मटेरियल यूज फॉर मैजिक परफेक्ट। क्या अभी ले नहीं सकते? रात में लेना है। ये कौन सा चुतिया आप है? रात में लेंगे ये फ्लावर। अभी बना रहा हूँ जिस दिन जैसा लगे। ओके ओके जिस दिन जैसा। तो अबे तो एम्ब्लेम पे ही छोड़ो ना फाइनली इसको। अबे कैसे लेंगे ये? ओ पानी मारना। ओके 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 ओके। Take it easy. इलेक्ट्रो में भी एक था ना नारुकामी सीड जो पानी से निकल रहा है। फन टू प्ले नहीं होगा इलान C6 अब मेरे को लग रहा है, क्योंकि अभी तो शेड कर देती है C6 में तो फाड़ देगी मैक्सिमम नीच लो भाई। जब पैसा है, जब स्वाइप कर सकते हो तो क्या है कि मेहनत। चलो बहस किया। I can tell you're an experienced traveler. I've also finished collecting a few here. Maybe next time you'll feel like helping too, Lynette. No way. I'm in power-saving mode today. Otherwise, I fear I may not have any energy left for the performance at the Opera House. Fine. Though the performance is still a long way off. Now that we're finished here, we should get ready to head back to the Court of Fontaine. So, we're going to the Court of Fontaine before we head to the Opera House? Good. Paimon wants a tour of Fontaine's largest city and try... कोई आर्कॉन क्वेस्ट देखते नहीं, ऑफ स्ट्रीम करना पड़ेगा मुझे। The young girl. वैसा नहीं है, बिल्ड करूंगा टू पीस देना। टू पीस क्यों दोगे? She's obviously a thief. Magicians and thieves practice similar methods. We divert attention and a distracted audience is one that won't watch her movement. Shodo Chucky in the house, guys. Oh, he's right! Shh, keep your voice down. We need to think of a way to catch her, but it seems she's very alert. You two can ride the lift over there and wait up top. I bet that'll be all right. मुझे तो भाई जितना पता उसके हिसाब से मैंने ऐसी बना ली है, इसी पे छोड़ दे रहा हूँ मैं। 64.6 कैसे हो गई वापस? 64 नहीं कर दिया था मैंने इसे, भूल गया मैं। टीपी कर लेता हूँ वैसे यार। This is the spot where Lyney wanted us to wait. Oh, look! Isn't that her? हाँ, और उंगली दिखा दे उसे। Oh no! Did she notice us? What should we do? Should we chase her? You're right. She might also... There's no sign of teeth. Nothing's happened for a while now. Paimon wonders if Lyney caught the thief. Yeah, let's... Are you sure that's all she took? You should check to... No. Anyway, I should be going... ऐसा लग रहा है Were you returning with the thief at stolen? PC. That's right. Pity I wasn't able to catch her. I saw the general direction she went,
but Lyney twisted his ankle, and I needed to make sure. Oh, did you get hurt? I'll be all right. It's... If you want to play at being a hero, at least try not to get hurt doing it. You're right, you're right. I have to admit, but at least we were able to get the stolen items back. What a slippery little thief! All right. Take it easy. How long will it take if I set out? The lighting was perfect when I took these photos. So, we ride this thing to go into the city? What an ingenious way to get a... This is an aqua bus. It allows people to travel between... It's pretty convenient, but the ride can become a little dull after a while. The scenery is always the same. That's why it's better to travel with friends. So you mean it's still boring even when I'm riding with you? No, that's not what I meant. It's just that, well, you don't really talk that much. Besides, it doesn't really feel like a real trip when it's just the two of us. Whatever. Guess that's what it's like to be an older... It's about time for us to leave. Let's get... चार्लेट आ गई इससे मिल चुके हैं ना हम लोग शायद किसी इवेंट में मैं खेल नहीं रहा था Oh, excuse me. Aren't you the great magician Lyney? Hello. I don't believe... क्रायो है ओ कैटलिस्ट क्रायो I'm Charlotte, a reporter for the Steambird. Nice to meet you. From the Steambird, huh? We've often relied on your paper to promote our... It's an honor to meet you. Wait, could that be the legendary traveler who's been making headline after headline in their journey across... Amazing! You recognize everybody almost immediately! I wouldn't be much of a reporter if I didn't know who's who. Wow, today must be my day. Who knew I would end up on the same boat as so many VIPs? Could my vision finally be showing me some... So, Charlotte, what do you usually... Well, when there isn't any breaking news, I mainly cover... You could still manage to keep readers' attention. For example, reporting on how a scammer once deceived vulnerable girls into relationships. Or how a financial criminal was once so poor that they ate a single piece of bread for 5 days. That's fine and all, but what I'm really after is exclusive, sensational news pieces that could shake the country. These smaller यार जियो और एनिमो कैरेक्टर्स को ला रही है पायरो क्रायो क्रायो कैरो है इसकी यार एक जियो कैरेक्टर है पूरे पैच में तक गुस्सा आ रही है The serial disappearances of young women, Kate. That's right. These stories are the talk of the town right now, and it's probably if I'm the first with a draft ready to publish when the kid... Oh! When that happens, I bet all the other reporters will shed tears. So, what is the serial disappearance? That's right. The first missing girl case happened almost 20 years ago. And ever since, after a period of time, another girl disappears. What the cases have in common is that the girls are all of a similar age, and that they've all vanished without a trace. But the scariest part is that to this day, many suspects have been arrested over the years in connection with this case. But shortly after each arrest, another disappearance would always happen. Yes, it's possible. But either way, I believe that every case has some precise truth behind it, waiting to be exposed. Yes, I agree. And at the very least, the family of those missing girls deserves some sort of explanation. I just imagined for a second what I would do if Lynette were to suddenly disappear. I'd pay any price to get her back, and then find a way to track down the culprit. Please don't imagine that, Lyney. Hey, we're almost there! Look! सीनरी देखा जाए
Well, I really enjoyed chatting with you. Life should be full of pleasant little surprises like this. Yeah, us as well. The ride went by too quickly. Ah, I have an interview to get to. I should get going before I'm late. Okay. Bye-bye. Bye now. Oh, be sure to stop. What a tough job. Always running around and interviewing everyone. Well, where should we go now? If you don't mind, how about we stop by my home first? Besides, I still have all the material. Sure, we wouldn't mind it. प्रेमिनेट कब आएगा? ऐसा कुछ ज्यादा एडवांस नहीं है ये सिटी। इनाजुमा पूरा गरीब लगता है, सुमेरु तो वैसे का पता नहीं कौन से सुमेरु, और ये तो भाई क्या बोलते हैं, इनाजुमा पूरा गरीब थे। तो मॉन्स्टर थोड़ा सा मॉडर्न लगता है, ल्यूए भी मीडियोकर है। Man. Good roll. All right, maybe I'll take one more day off and knock out the rest of the work once I'm feeling up to it. Does this big machine run on clockwork too? Take it easy. क्या? अलग ही बकचोदी चल रही, कुछ चल रहा है। अबे, यार ये बकचोद आदमी भाई। Naughty, huh? This is our current abode. Ah, Femini, you're home. Where did everyone else go? I have some new friends that I would like to introduce. Oh, they all just went out a moment ago. आ गया इसका भाई। I see. Everyone is getting busier now that Father will be returning soon. I suppose that can't be helped. Allow me to introduce you to my little brother, Femini. He is a phenomenal diver. Hello. अभी भी भाई बकचोदी चल रही है चैट में। नमस्कार नमस्कार, कैसे हो? नमस्कारा। I'm very proud to have a diver as a brother, Lyney. म्यूक्यूमी को देखो क्या लिखी है ऊपर। Lyney, could you come here for a लॉन्ड moment? भाई ये अगर लौंडा है ना भाई, इसने जो मजे लिए हैं चैट में भाई। What is it, और अपन Femini? दे भी रहे हैं Do you have ऐसे something to tell me? मजे। क्या चल रहा है देखो तो। किस्सी चल रहा ऊपर और कुछ नहीं। पढ़ो तो चैट नहीं दिख रही क्या आपको पुरानी? टट्टी और कॉन्क्वेस्ट। Okay. बहुत बेकार है क्या? मैंने अभी तक बेकार है, अच्छा नहीं है
यार ऐसा मत बोलो। बड़ी उम्मीद से देख रहा हूँ मैं। The traveler and I collected more materials to make. Yes, I went diving and gathered lots of उसने लिखा मिकेमी ने यश एंड सारा किस बताओ। That's our Fremine, always quick with the underwater work. All right, I'll take these to the workshop. मजे लेता हूँ मैं। Looks like rain. Looks like rain क्या भाई बारिश ही है। और कुछ तो पकता है क्या फाउंटेन के ऊपर? भाई कौन बच्चा इसका लिखा है स्टोरी? I'm afraid that's just how it is. भाई आपसे बात कर रही है स्पेनिश में। What's wrong, Fremine? There's a legend about the rain that I tend to believe. It's said that a dragon of water once resided in Fontaine. अभी भी जिंदा है। Though we don't know where the dragon went. Every time it weeps, the skies will cloud up and pour out rain. When I was a child, my mother told me that if I wanted to go outside and play, I should yell toward the sky at the top of my lungs. Hydro dragon! Hydro dragon! Don't cry! Fountain? Yes. If it's an elemental dragon, yes. Then having the power to make it rain wouldn't be very Animo वाला देख unusual. चुके हैं अपन, जोंगली वाला देख चुके हैं अपन, इधर वाला है, फिर इलेक्ट्रो वाला तो मर ही गया था। Hydro dragon, don't cry. बहुत बढ़िया। रुक जाएगा ना ये? ऐसा सुन लेगा तेरी बात ना न्यूब्लेट इतने आसानी से। Doesn't seem to be of any use. It is just a legend after all. You know, you might be a more popular magician if you understood the concept. दुबई भाई कहाँ चले गए? अभी भी। It rained for longer than I suspected. Was there something you need? Yeah, some preparations for the show at the Opera House. I need to find a way to catch the last aqua bus of the day. On the day of the performance, just ride the aqua bus to the island of Aeneas. I'll have Lynette meet you at the fountain in front of the Opera House. अरे नहीं यार। Are you leaving now? What is it, Fremine? I'm in a hurry. Oh, I get it. Perhaps we could trouble. I'm afraid that Fremine can be quite introverted. And the boss there tends to be pretty talkative. Fremine has always been a little afraid of her. Sorry for the inconvenience. I'm quite useless when it comes to such tasks. I'll think of a way to make it up to you. Oh, no need. This will be a walk in the park for us. Yeah, shut up, PS4, Genshin, Bleach, Resident Evil, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. I got a new letter from an informant. Looks like the situation has changed again. Yeah. Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose from. Need me to come up with some for you? ये क्वेस्ट नहीं देख सकता मैं, तो क्या करें भाई? आप लोग कर लिए, हम कैसे करें क्वेस्ट? आप ये बताओ। जा रहा मैं, करो आप ये बकचोदी। ठीक है भाई, ठीक है। बाय। सब साला यही बोल के चले जा रहे लोग।
लाइक तो करते जाना तभी भाई। आप तो फंड हो गए, कोई नहीं, बैकग्राउंड में चल रहा है। मैं ऑफेंड नहीं हुआ यार, आज सब लोग यही चीज बोल के जाते हैं बार बार। क्वेस्ट चूतिया मैं जा रहा हूँ, क्वेस्ट चूतिया मैं खुद करके देखूंगा, क्वेस्ट चूतिया ये होगी, क्वेस्ट चूतिया ये। 4-5 लोग आपसे पहले बोल के यही गए। ऑफेंड होने की क्या बात है? मुझे तो खेल दे, मैं तो क्वेस्ट ही देख रहा हूँ। चैट में अपनी तुम्हारी मिकेमी भाभी है ना। We're just here to deliver some. These must be for magic pockets. Like, no need. They've already prepaid, but they insist. Wow. Chalo, next, go next. But who knows? Maybe there's good money to be made. Hey, is this machine what you use to make stuff here? It looks really advanced. Press machine. Why use your hands when a machine can do the work? It would be a waste not to use the latest technology. And wasting is a kind of crime. But where does a big machine like that get its power from? Well, it's a little complicated. I'm not sure I can put it in layman's terms for you. But basically, everything we usually use here in the city is powered by indemnitium. It's a type of energy that's produced from trials. Energy? How can trials produce energy? Yeah. Well, I'm not completely sure of all the details. When a trial is in session, Lol, the good people, same thoughts. Cardinal harvests people's belief in justice and converts it into energy to be used all around Fontaine. हबीबी भाई आप मजे ले लो आप That's भी। what its other function is? आप पुराने हबीबी नहीं रह गए जो आते थे स्ट्रीम पर। अब आप नॉलेजेबल पर्सन हो गए हो आप। But Paimon still doesn't get it. Oh yeah. So that means the Hydro Archon relies on the machine to take the energy created by belief and turn it into... Even though I've never heard anyone really put it that way before, besides indemnitium, we have another type of energy called pneumosia. It isn't produced by the power of the Archon, but it is unstable by nature. I thought I'd find you hard at work, but here you are chatting the day away. Since you're... You again! Didn't I already promise you that I'd have the MAONO AU-A04 to Conferee of Cabriere by next month? Yeah, but how do we know that you won't go running off by the end of... Huh? Seems business isn't so great for the workshop. Hey, hold on. Before you go around trying to collect payments, why don't you settle your own debts first? If Conferee of Cabriere wants to poach clients from Northland Bank, that's fine. But I'm afraid you still owe the bank a hefty sum of mora. So why don't we work things out between us first, before you get back to your little conversation here? You're from Northland Bank. But we said we'll pay everything we owe next month. Why are you hounding me now? Traveler, Paimon! I didn't think I'd run into you here in Fontaine. What are the chances? We're surprised to see you too! What are you doing here? Long story short, I've already been in Fontaine for some time now. And honestly, but it seems that fate brought our paths together today. Not only will I have some good friends here now, but ones who always seem to find trouble. Either way you look at it, it seems things are going to get a lot more interesting now. Pretty sure we'd want to avoid anything that you'd find interesting. Besides, our trip here has gone pretty well so far. Right, Traveler? Hey, you, Northland Bank boy. Don't interrupt. It's not often I run into the Traveler like this. Why don't you wait? You kidding? Aren't you the one looking for us? You really expect us to sit and twiddle our thumbs while you catch up with your friends? Listen to me, boy. If you want your mora, fine. Why don't you... Hey, I just said not to interrupt. Oh, by the way, Traveler, the last time I took Tonya and Tusser ice fishing, Tusser... Hey! That's way over the line! All right, boy! Can you at least let me finish one sentence? Fine. Though the bank told me not to get rough with our clients. You're the ones who started it. This is an act of self-defense. You two will have to be my witnesses, okay? I'm sure this won't take... Oh, baby! Brace yourself! This is gonna hurt!
What's your deal, Brad? How are you so strong if you're just a staffer from Snezhna? Oh, now you notice. It's a little late, don't you think? Huh? Now's my chance! Huh. That was weird. I'm not sure. It's as if I suddenly lost control of my hydro powers when I needed them. Maybe there's something wrong? Strange. How could that happen? First Interesting. time Paimon's ever heard of someone losing control of their vision. Never mind. It doesn't matter. If I want to stay sharp, I shouldn't be relying too much on my vision anyway. Besides, I always have my delusion in case I need it. So what are you doing in Fontaine, child? I don't see its work for Northland Bank. Well, I guess it's because I've been in a Huh? What kind of reason is that? I don't know. Maybe I still have a lot to learn about myself, but recently, there seems to be some sort of restless power stirring inside of me. And I don't know why, but... Maybe you losing control of your vision just now is connected with that power you're feeling inside. That is a possibility. I can't remember if I ever mentioned it before, but when I was 14, I fell into some unknown abyss. It was during that time I learned nearly all of my abilities. The one who took me under her wing and taught me was named Skirk. She was always quiet and very mysterious. Nobody knew where she came from or what she had been through, and she was always very... One time, I asked her why she was willing to take me on as an apprentice. Because I had awakened it, and traces of it remained on me. She said that all my... But what is it? What did you awaken? She never explained that. But my guess is that it's related to a dream I saw when I had just fallen into... In my dream, I was in the deepest depths of the sea, and the boundless seabed was all around me. But in... A whale? Oh, that sounds familiar! When we fought against you before, you summoned a huge whale that seemed to leap at us. Is that... That's just an abstract form of a whale that... It takes that shape because the scene I dreamt of the whale has always been stuck in my mind. So you used the whale as inspiration for one of your moves? Huh. So why don't you just go ask your master? You make it sound so easy. Ever since the incident I experienced there, I've never stopped searching for Master Skirk and that unknown abyss. But it's been years now, and I've still found nothing. There isn't even a trace. Oh, it sounds like some kind of... Yeah, I'm out of leads at this point, but there's nothing more I can do. Oh, seems the time really flies when I'm talking with you. What? More work for the... No, it's more of a personal appointment. Lately, I've been sparring with some of Fontaine's official champion duelists whenever I'm feeling bored. Official champion duelist? Yep. In Fontaine, before a criminal goes to court, they're given one chance to defend their honor by request. The champion duelists are all-powerful fighters selected from among the nation's best. So engaging in such a duel is regarded as a symbol of defending your honor. If a criminal manages to win the duel, they'll be acquitted. And the worst-case scenario is that you're simply killed in the duel. Though it's rumored that Fontaine has a death penalty, from what I can tell, no one has ever been official. So really, the only people who opt to duel are those who have suffered a grave injustice in being accused, or those who greatly value... So, do many people actually get out of their trials by winning the... Apparently, it's exceedingly rare for anyone to actually win. Fontaine probably enacted this system as a way to show that the nation respects the honor. Besides, none of the champion duelists are to be trifled with. Which is exactly why, apparently the one I'm meeting today, Clorend, is the strongest of the champion duelists. I had been asking her for some time before she finally... Well, that's child for ya. Oh, before I forget, I want you to have this. Eh? Huh? Your vision? You're seriously just giving it away?
I'm just worried that it could become uncontrollable again. I'd be pretty upset if it got in the way of my duel. So, I think I'll be better off without it for now. Besides, I just need you to hold on to it for a short while. I'll come retrieve it when I... Paimon knows what you're up to. You just want an excuse to come talk to... Whatever gave you that idea? Oh. क्या लॉजिक ही नहीं बनता इस बात का Sneaky guy. Well, चूतिया क्या मेरे को समझ नहीं आते कुछ गलत चीज है wow. Who could have seen that coming? The reporter who... sorry. Paimon was just a... The whodunits here in Fontaine are a lot different than the like... It's so exciting to reach the moment... Oh, sorry, hey. Lyney said that the Opera House is on air in ES, so let's go ride the Aquabot! घंटा एक्वा बोर्ड से जा रहा हूँ मैं भाई ये लेकिन सीन तगड़ा लग रहा है दिस सीन इज वेरी गुड Oh, Archon. Please, bless us. I don't know why you always feel the need to ask so much. I'll be happy. I guess if there are, kid, then there... Maybe this is one of the custom... Vache. What's wrong? Vache. Vache. The fuck? No, Paimon didn't say anything. Welcome to the Fountain of Lucine. All the water flowing through Fontaine converges here. It's customary for newlyweds. Lynette! Lyney asked me to wait here for you, remember? Right. What do you mean? There are a lot of people here right now. Hey, you're not trying to... I see. I might be... In fact, you might not be imagining things at all. I suspect that what you heard is a result of your... It's because of her sensitivity to the hydro element? But what would he... When do you cry, Paimon? Wait, what? Just answer me. When Paimon's really sad? Oh, and... Then you should understand that tears contain your most intense emotions. Like I just mentioned, the Fountain of Lucine is where all the flowing water in Fontaine converges. So maybe what you heard was the intense emotion. So, what did the voice say? If you were hearing their emotions, then Paimon wonders what happened to them. Rather than worrying about... Don't let that calm look of his fool you. He tends to get pretty... Oh, right. That makes sense. Let's go in and see Lynn. ये क्या है बे? वो अल्ट मारा है भाई ऑब्वियसली मेरे को भाई अगर किसी को लग रहा है तो सीधी लगेगा ना We are born from Varanasi, so often wondering how did the first incident be? The flesh were like we were always the greatest of हैं जी 200 IQs पे खेला है ठीक है काटा है अबे आर्टिफैक्ट दे रही है चूतिया गजब गधी है
ये तो अंडर वाटर वाला है। Take it easy. Traveler in Paimon, good to see you. I knew you... Are you kidding? We wouldn't miss it for the world. I can tell, but you're actually right on time. The audience still hasn't started... Yeah? The Opera House has assigned seating, so you always have to make reservations. Okay. Paimon तो बैठेगी नहीं. Don't mention it. There's no need to keep thinking. Hey, Lyney! Could you come over here and take a look? Oh, I'll be right there. Seems there's an issue with the stage props over there. Yeah, we'll just go... Oh, baby. भीड़ तो मस्त लग रही है। हमें मुझे ऊपर बैठना था, फ्रंट रो पे कहाँ ले आया? मुझे असैसिन क्रीड 3 की याद आ गई। Take it easy. ओह, न्यूब्लेड। ओ बेटे। Oh, these should be our seats. Come on, let's sit down. तू बैठ पाएगी चूतिया? Hydro Dragon. Hey, Traveler. Maybe we should strike up a conversation with the person... Oh, you little... Excuse me. I did not realize you felt awkward. I am terribly sorry. I would be perfectly happy to chat with you if that is what you would like. Oh, so you heard all of that, did ya? Boy, you sure have good ears. Paimon thought she was... wait, that's not it. Paimon's... Sorry. Paimon's the one who was being rude, talking under her breath like that. Oh, Paimon's got it. A friend, you say? Yeah. Well, if Mr. Lyney would like to be my friend, I would be more than happy to reciprocate. क्या है बे? So you're not friends Not with aligned. Lyney then? Dissing क्यों है ये इसके माउथ से? This is getting more awkward by the second. Paimon nearly forgot to make her introduction. Nice to meet you. Paimon is Paimon, and this is the Traveler. We just arrived. It is an honor to meet you two. I have heard of your deeds across Teyvat, and as required by proper etiquette, I will also introduce myself. Chief Justice. I am... Oh, Monsieur Nervillet. What an honor it is to have you here to see my show. Ah, Mr. Lyney. I should say it is in fact an honor for me to see your performance in person. Wait. Nervillet? Could he be... I saw you all chatting just now, but it seems you allow me to introduce you to Fontaine's Chief Justice. That seat is always reserved for him. It wouldn't be too much to say that he's the symbol of justice and... Whoa! Sorry for being so... No offense taken. Being Chief Justice is merely what I do for work. Nearly every person has their usual reserved seat, so I'm not so... And by the way, I should probably let you know... There's someone sitting up there in the VIP seats that has been striking a pose for quite a while now. I believe she is trying to give you a most elegant and impressive first impression. So I think you should take notice of her sooner rather than later. Otherwise she may become flustered. Huh? Oh, it's Farina, the Hydro Archon. Very good. That is for the best. No need to pay her any more attention.
We may now enjoy the... So is this what things are like between the Chief Justice and the... All right, please wait just a moment भाई longer. कुछ तो मस्त I've सीन है pretty भाई much इन लोग के finished my बीच का भाई preparations, and the performance will start as soon as the audience has made their way to... Yay! The show's finally about to start! Oh, they're dimming the lights! The show must be sorry. Welcome, one and all, to the Opera Epiclese. I am the star of today's show, Lyney. And over here is my sister, Lynette, who will be working as my wonderful assistant. Please, let's give her a warm welcome. Hello, everyone. I know she may seem to be a little sleepy right now, but that's just a sign that she's nervous. Whatever. Now, some of you may be thinking, two vision holders who can freely manipulate elemental powers performing magic is not true magic at all. So, I would like to take a moment to assure you that elemental powers will have nothing to do with what you will witness on the stage today. Both Lynette and myself have removed our visions for the show. That way, even the gods won't be able to help us. Oh, good point. That's what makes the show real magic. Now, without further ado, let the show begin. Lynette will now exit the stage to make some preparations. I know you might miss her, but don't worry. She'll be coming right back on stage momentarily. Perhaps in an unexpected way. I'm sure she'll be stealing the spotlight soon enough. Oh, and before I forget, there's one more thing I should say. You never know what can happen in the blink of an eye. A magician's greatest skill is making things disappear or appear. The possibilities are endless. But this isn't what you came for. These little tricks, you've seen them all before. So it's time for something truly extraordinary, don't you think? This one's a little tricky. Using this water tank, I shall make my sister vanish completely, right before your very eyes. It's actually quite simple. She'll just turn into air bubbles and float right out of the top. Oh no! I told them to check all the props carefully. With the lid on, even air can't escape. An amateur magician would be getting very nervous right around now. Luckily, it's me on stage, so let me show you what a true virtuoso can do. Lynette, are you still there? Don't go too far. We don't want to use up all our magic. Hi, I'm back. Uh-huh.
water tank? How did she disappear and then reappear out of nowhere? If we could see easily through his tricks, then that would mean to appreciate magic, you should focus on the show happening on stage, rather than getting caught. Guess you're right. Thank you everyone. But our magical journey has only just... The magic of transformation and disappearance can go far beyond what you've just seen. I'm sure many of you are thinking that escaping the water tank was impressive enough. In which case, I have... So, for my next trick, I will require the... Please, if my assistants could bring out the magical boxes now... There are 2 boxes, and only 2 boxes. One is here, and one is there in the aisle among the audience. I'm sure many of our clever audience members have already guessed our next magic trick. A swap! Our lucky audience member and I will each enter a magic box. After 1 minute, we will each emerge from the opposite box. Now please, everyone pay very close attention. Wow! How's he gonna... Hey, do you think this is all magic tricks? Or does Lyney have actual super... The lucky audience member will be generated by this random number. It selects numbers entirely at random. Even I don't... Now then, let's begin. Let me see. Oh, row 7, seat 3. Congratulations! You now have the chance to experience magic firsthand. Please, come forward. My assistant will take you beside the magic box. I'm sorry, it might be a little cramped inside, but no need to feel nervous. You don't need to do anything, but no matter what, if the magic is interrupted, who knows where you might... Oh... All right. Before I enter the magic, like this. 60, 59, 58. I won't be able to see anything in the pitch black box, so I'll be... Oh, and no tricks now. If you... Ooh! Paimon kinda wants to count... No, that won't do. I can see it in your eyes. You come on, repeat after me. 60, 59, 58. ओए भाई बच्चे. That's right, perfect. रुक Keep क्यों it दे, going. बोलते जाओ. All right, I'll see you all on the other side once you've finished counting. 54, 53, 52? Huh? Why aren't you counting, Nervalet? I am counting in my head. I think things are exciting enough in here as it is. Merely a consequence of my identity and personality. Do not worry about me. Just enjoy the show. Oh, all right. You look so serious that Paimon thought you might be feeling uncomfortable or something. 40, 39, 38. Mr. Lyney, are you all right in there? Is everything ready? Yes, I'm fine. I'm just double-checking the direction of the magic. It would be a disaster if we get sent to the wrong place. Even though he's saying that, Lyney doesn't... What was that noise? Did you hear it too? Not sure. Anyway, that's... 25! What's wrong, Mr. Lyney? I can still hear you moving in there. I seem to have accidentally knocked over a decoration. बंद कर चुका हूँ मैं I'm trying to fix it, but it's pitch black in here. I can't tell left from... Never mind the decorations. No, that's unacceptable. 19, 18, 17. पिल जाए भाई लड़की को पेल दो भैंस की यार. It seems things aren't quite going as... It feels like you're all starting to count faster, but that's all right. I know it can be tiring to do such a long count. 10 seconds and change is still Yes, plenty of Dragon भाई time. अब ड्रीम कर रहे हो ड्रीम. 10! Almost there now. Whew. Swapping 2 people is harder work than you might think. Even a master magician like me can't guarantee I'll get it right the first time. Hey, wait! Is this the back one? I can't tell. They both look the same inside. Huh? Nope, that's not it. I'll try again. 7! Hey, slow down! Honestly! 5! 4! 3! Whoops! That doesn't count! 0! Ta-da! नीचे से चल के आ गया ऊपर. Ta-da!
मर गई। The fuck? फेल दिया भाई सही में। तो सही में पिल गई बे। इसका है वो पिल गया असिस्टेंट। The fuck? Unexpected. Is this part of the Mr. Lyney? You're going to... What happened? Oh no. Maybe this isn't part of the show. The girl was... This performance is over. Medical staff with me. Guards, secure the scene and detain all the performers. Seal the exits. No one is allowed in or out at this time. Yes, that's right. If this was just an accident, then we must investigate the cause. But if this was all part of some... No need to be alarmed, you two. We'll get to the bottom of this soon enough. Unfortunately, the person who is in the magic box has been pronounced dead. His name was Cowell, one of the assistants in Lyney's magic troupe. Apparently, the fireworks on stage ignited the ropes that were suspending the water tank, which then caused the tank to fall onto the stage. As of now, we are still not sure why we found Cowell in the box, rather than the guest from the audience. And after an initial search of the area, the guards have confirmed that the girl is nowhere to be found. It appears that this incident was not merely some mishap with the performance. And there are many indications that it is connected with the case of the serial disappearances of young women. The serial disappearances case? That's the case that Charlotte mentioned before. I know the truth. I can see through the whole thing. Really, using such a shallow and obvious mystery as his finale. Did he really underestimate us that badly? I say that our powerful magician, Mr. Lyney, is now the prime suspect for the serial disappearances case. Lol. Huh? Why me? This whole thing was an accident. No, this all occurred during your magic show, did it not? The missing girl disappeared after being chosen, did she not? The deceased is one of your assistants, is he not? Now that I think about it, that whole speech about magicians making things disappear was nothing more than a provocation, a bald-faced challenge. That can't be right. He was in the box on the stage the entire time. Besides, before the show, he told us that he would like to catch the criminal behind the disappearances. He could have... Save discussion for a later time, please. Lady Farina, may I assume that your comments just now constitute an accusation against Mr. Lyney and his associates, and that you are pressing charges? Huh? I just think that he... Well, but what Lady Farina said just now makes perfect sense. A kidnapping and murder carried out under the cover of a... I mean, of course, my dear people. But that's right. I mean you, traveler. You'll support Lyney, won't you? After all, then there's no problem at all. You know, the traveler... But with Lyney's help, our little duel ended in a draw. But draws really are the most boring... So, no more draws. Between the two of us, there must be a clear winner and loser. And what better place... It wasn't a I understand. Charges have now been pressed. And well, traveler, seems Lady Farina has set you in her sights. But putting her dramatic... Are you willing to act as Mr. Lyney's attorney and defend... Very well. The trial will be held a day from now in the Opera House. Both sides may investigate the scene to build their cases and search for the truth. Lyney and his troupe are all potential suspects, and the audience may begin to leave in an orderly fashion once they have been... A day isn't that long. Let's see what kind of case this big-shot outlander can build in such a short amount of time. I'm really quite looking forward to hearing it.
ब्रेसले क्या रोल प्ले करेगा स्टोरी में? Sorry about it. Of course. Yeah, I'm a little. I know you already claimed that you would defend me, but now it's. I understand. I'm sure everyone sees me. I don't know whether what happened. As for how that girl chosen, even a skilled and knowledgeable magician like myself couldn't pull all that off in just 1 minute. Which is precisely why we need to मीकू ये भी आती है क्या? यहाँ भी आती है क्या? कौन है मीकू भाई? लूफी भाई मीकू के बारे में बताओ कौन है ये? ये लौंडा है ना? बहुत मजे लेती है भाई आके। कौन है लूफी भाई? बताओ सबके चैट में जाके TMO करती है। That's the right attitude. लूफी भाई आप बात तो Feeling depressed isn't going to help ये me ज़्यादा now. अच्छा क्वेश्चन है I need to लूफी get भाई back to मीकू my के normal ऊपर। self. But with the guards watching our every move, good thing you agreed to be our attorneys. Yes, thank you so much. Yeah, just leave. Since we're going to. Oh well. The secrets behind our magic are past saving. I suppose you're Probably है right. ना भाई मुझे लग रहा था। But if revealing our we should go और somewhere else. किसके स्ट्रीम पे आई है? Let's go have a look while the investigation teams are. ये क्या पहन लिया पाइमोन ने? चूतिया। ओ भाई। Hello, officer. How's the investigation going? I see. You must be मैंने the सेकंड एक्ट traveler कर that दिया। Lady Farina mentioned. मैं तो पहले ही कर रहा हूँ भाई। आज स्ट्रीम पे एक्ट करने से स्ट्रीम लोग ही देखना बंद कर जाते भाग जाते हैं भाई। आप मीकू के बारे में बताओ ना, और कहाँ है? और कहाँ दिखती है आपसे? One of Lyney's बहुत तो assistants, स्ट्रीम में। named Cal. ओह got it। Even though he hadn't joined the मजे ले troop रही है ये। long, the assistants are स्पेनिश में usually in बात charge करती of है setting लूफी up भाई and ये सबसे। inspecting the props, as well as assisting with the show. मुझे लग रहा है As कोई you इंडिया का लौंडा probably है बच्चों saw कर रहा है। when you were in the audience, the Mike water after tank 50 suddenly ever I'm feeling fell proud. and smashed the. चलो कोई This तो is the गेम आप real ढंग से खेल ले रहे हो। mystery. We've already searched the scene and were unable ये to कैसी find any लाश है traces of the girl. However, if you look carefully, the box was positioned directly under the water tank. The ropes holding the tank were then burned by the pirate. All these factors lining up so perfectly makes it, if anything, the more logical explanation is that the whole incident was intentionally planned, and Lyney is the most likely person to have access to all these areas. But he doesn't have a motive. Are you both good friends? Well, you can't say we're good. So in just a short time, he was not only able to. I know there's no such. I've seen a lot of cases. Sorry. Anyway, you may investigate. SCP probably translator. से परिमान को बुलाओ सब सॉल्व। SCP प्रद्युमन है, परिमान नहीं है साले। और ACP है, SCP नहीं है। SCP additional is different. Oh, okay, समझा। बेचारा मर गया ये। Whoever the murderer. तो ये सब क्या करना है भाई? ये सब नहीं करना भाई मुझे फालतू। क्या किया जाए? थोड़ा ब्रेक लेते भाई। एक्ट 1 कितने एक्ट हैं इस वाले में? चैप्टर 4 के कितने एक्ट हैं? मैं निकल नहीं सकता इससे। निकल सकता हूँ टीपी मार के यहाँ से। AR-57 हो गया भाई फाइनली में। ओह कांग्रेट्स। क्या मिला AR-57 पे? क्या मिलता था भूल गया मैं। AR-57 पे क्या मिलता था? तू क्या XP दे दिया क्वेस्ट? ओके already reached AI at 57 with no characters built. Lol. I was standard wish or 2 days. तो गाइस मुझे लगता है कि यहीं पे आज स्ट्रीम बंद करना चाहिए। कर लिया आर्कन क्वेस्ट। ज़्यादा लोग हैं भी नहीं, सब लोग अपने क्वेस्ट में लगे हुए हैं। तो मैं भी जाता थोड़ा आराम करता हूँ, फिर इस क्वेस्ट को कंटिन्यू करूँगा ऑफ स्ट्रीम। फिर कल सेकंड एक्ट में मिलेंगे। मेनली चाइल्ड की फाइट देखनी है। कौन सा कैरेक्टर बन रहेगा पुल के लिए? वैसे न्यूब्लेट
मेरे हिसाब से न्यूब्लेट वर्थ है, लेकिन वेस्ली क्योंकि मेरे पास उसके वेपन्स और सब कुछ हैं एंड मुझे उसका एनिमेशन अच्छा लगता है, मुक्केबाज अच्छा लगता है, इसलिए मैं पुल करूँगा। नहीं तो लिनी भी, अगर डीपीएस चाहिए तो लिनी भी बुरा नहीं, लेकिन न्यूब्लेट का कुछ नया मैकेनिज्म में तो अच्छा लग रहा है देखने में। न्यूबी हेट्स फिरीना, भाई हेट्स नहीं, अब उसको कुछ पता है जो हम लोग को पता नहीं है। हाइड्रो ऑर्कन चूतिया है, मुझे तो लग रहा है ये हाइड्रो ऑर्कन है भी नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। आई नो सोर्स ट्रस्ट मी ब्रो। लॉल क्या लिखे थे लूबी भाई, क्या डिलीट कर दिया? मुझे फिरीना बहुत चुतिया लगती है, मतलब जो जैसे अभी तक उसको रिप्रेजेंट किया ऐसी लग रही है वो छोटी बच्ची नहीं होती, बॉना बीस टाइप की एटीट्यूड वाली, वैसी टाइप की है वो, छपरी टाइप्स। नो न्यूब्लेट डिड इट। एफटीपी कोई अच्छा न्यू कैरेक्टर बताओ। F2P अच्छा न्यू कैरेक्टर बताओ। आपके पास कैटलिस्ट है नहीं, न्यूब्लेट ही बनाना ना, और क्या करोगे? डेंड्रो टीम्स और न्यूब्लेट, और क्या इजी। टीवीना नहीं क्लोरीन। ओह ओके ओके। Where do I sign to compete with क्लोरीन? क्लोरीन के साथ फाइट थोड़ी ना करना है, क्लोरीन के साथ तो कुछ दूसरा चीज साइन करने का मन है। विद अ सिंगल ब्लो। ओके ओके। न्यूब्लेट कौन है? न्यूब्लेट चीफ जस्टिस है। न्यूब्लेट तुमने लीक्स नहीं देखे? मैं लीक यूट्यूब पे चलाऊंगा तो वो हो जाएगा ना, स्ट्राइक पड़ जाएगी ना। मैं चलाना चाहता हूँ, मैं देखता हूँ और कोई नई लीक्स आई क्या। कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 3 का ट्रेलर आया? ओ आ गया, चलो कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 3 का ट्रेलर देखते हैं गाइस। लेट्स गो। मिनट इधर म्यूट किया जाए, सेटिंग्स, ऑडियो म्यूट, इधर आते हैं स्क्रीन शेयर गाइस। कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 3 का ट्रेलर देखते हैं। स्क्रीन शेयर। Yeah, C0 has no interruption resistance, easily हो जाएगा। ओके ओके, अभी देखो, देखा। हाँ C0 में उसके पास नो इंटरप्शन नो इंटरप्शन रेजिस्टेंस, इजी नॉकआउट। हाँ तो उसके लिए कुछ मैकेनिज्म देखेंगे ना। हाँ फाइट करते करते बदमाशी करूंगा लॉल। क्लेमर हाइड्रो है ना वो, कौन नई कैटलिस्ट है वो। ड्यूरिंग चार्ज अटैक। ट्रेलर देखते गाइस, ये खेलूंगा मैं जब आएगा, लेकिन ऑफ स्ट्रीम ऑफ कोर्स। Let's make sure they don't see the sunrise. ओह गुलाग वापस आ रहा है। We need to know if he's working with Moscow. We're in position. Let's go to work, Bravo. कैप्टन प्राइस के बिना तो ये गुलाग अधूरा है। He knows you're coming. Copy that. को ना मारे इस बार पैसे। Devastation on a global scale. So let's go. We have two missiles incoming. Right there. Get out. It's killing civilians. Visual on target. We need medevac now. You want some work? प्राइस मर रहा है। नहीं, ये क्या देखा मैंने? The fuck? We need medevac now. प्राइस टपकने वाला लग रहा है इस बार।
back off. Pre-order the Vault Edition and get the Nemesis Operator Pack and the Fate Weapon Vaults, the Season 1 Black Cell Bundle with 50 tier skips, and more. भाई साहब और भी कुछ रिलीज हुआ है? नहीं। गगन भाई भी लाइव आए हैं। लॉल यहाँ भी पास। अरे मैं गेम मैंने लिया था बैटल पास, इस बार नहीं लूंगा। बहुत टाइम बहुत खेलना पड़ा था गेम। तू फिशिंग कर, ये फिशिंग करेगा तब मैं ये वाला डोमेन करूंगा। मेरे को डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए कोई। अराइज व्हाट द फक, ये क्या है? ये अलग लौंडा है भाई, अलग ही एक्साइटेड रहता है हमेशा। व्हाट हैपेंड? देखो लूफी भाई, आपकी म्यूक्यूमी आ गई चैट में, लेकिन म्यूक्यूमी बेवफा, इतना पता चल गया मुझे। इतना तो हो गया, पता चल गया। लीक्स देखते ना, रुक जाओ 1 मिनट। लीक्स देखता, कुछ नए आए क्या? वेपन के स्टैट्स देखते, रुक जाओ। एम्बर.टॉप खोलूं मैं? 1 मिनट। एम्बर.टॉप तो खोल ही सकते हैं अपन। एम्बर.टॉप खोलते हैं। खोला लौड़े। यार क्या बोल रहा हूँ? क्रेडिट और एम्बर.टॉप। यश नो, यश नो। हार्ट ब्रेक हो गया इसका, देख रहे हो? अलग मस्ती चल रही है इसकी। नया इवेंट वेपन। आर्किलिनो uses spy Pulam? The fuck? Good roll. All right, maybe I'll take one more day off and Arkilinno Pulam use करेगा? How does this person know बेवफा meaning आयो? Lol catfish. अबे लेकिन can be picked by Nublet and vice versa. Oh, ट्रैवलर का जो ऑर्ब है ना, वो न्यूबलेट पिक कर सकता है। ओह, मतलब जनरल मैकेनिज्म है नया हाइड्रो कैरेक्टर्स का ये। अबे यार ये सब स्ट्रीमेबल में, वो चालू करना पड़ेगा मुझे। सिंगापुर सर्वर मतलब आरके नहीं, भाई प्रोनाउंसिएशन करते हैं कैसे करते हैं ये तो बताओ। आर्लेक्नो क्या बोलूं मैं? आर्किलोनो, आर्लेक्नो। बस नहीं। अरे वो कहा किसी ने, मेरो ने रिवील किया कि वो है, वो कोलाम यूजर है। आर्लेकिनो, ओके। आर्लेकिनो इट्स लाइक पार्ले, आर्लेकिनो। क्या बकचोदी है, सीधा नाम नहीं रख सकते इसका। वो छोड़ो, ये क्या पोलाम कैसे हो गई है? लेकिन ये स्वर्ड नहीं होने वाली थी ये। क्या चल रहा है ये भाई साहब? नया वेपन देखोगे? नया वेपन देखते हैं। यस, मैं भी वही लीक देखा। ये वेपन अपन को फ्री मिलने वाला है। ये उसी का न्यूबलेट का वेपन है। आई नो आई विल लूज सो आई कैन स्टार्ट सेविंग फॉर नाइदा। नाइदा के लिए तो मुझे भी है। देखो नाइदा कब आती है, अलग गलत टाइम पे ना लाए ये लोग। यही वाला वेपन फ्री मिलने वाला है, सिंपल। आई डोंट। ठीक है ये वाला, लेकिन ये एनर्जी रिचार्ज नहीं होता ना यहाँ पे, तो ये उसके लिए भी अच्छा होता है। ये क्या कहते हैं, ब्रेसलेट के लिए। What happened Mikumi? सुख में दिख दो एक्सक्यूज। क्या बात कर रहा है? क्लोरेटेड का जेपी वॉइस सुना? नहीं
मेरे पास वॉइस पैक नहीं डाला है मैंने दूसरों का। भाई 13 GB उसके लिए डाउनलोड किया। लॉल मैं नहीं किया, मेरे पास है नहीं वॉइस पैक। ये भी अच्छा वेपन लग रहा है। Thank you so very much. Good roll. All right, maybe I'll take one more day off and knock out the rest of the work once I'm feeling up to it. चलो गाइस, आज के लिए इतनी स्ट्रीम काफी है। 2 घंटे हो गए। कल आते हैं। कल वाइफू टीयर लिस्ट वाली रहेगी और थोड़ा सा एबिस करेंगे। अनुभव भाई तो आज आए नहीं, आए थे चलेगा, नहीं तो अनुभव भाई का एबिस करेंगे। ठीक है गाइस, फिर स्ट्रीम एंड करते हैं। गेंशिन मेरे लिए आरएनजी है, मेरे लिए लाइफ पूरी आरएनजी है। ऑफ स्ट्रीम गाइड करोगे ना? हाँ मैं सोच रहा हूँ क्वेस्ट कर दूँ मैं ऑफ स्ट्रीम, क्योंकि कोई देख ही नहीं रहा स्ट्रीम पे क्वेस्ट, तो मतलब क्या है? सब लोग को बकचोदी पसंद है स्ट्रीम पे। Looks like the situation has changed again. तो स्ट्रीम पे बकचोदी करने आते हैं बस। हाँ वही ना। चलो ठीक है, फिर एंड किया जाए स्ट्रीम। बाय गाइस।